Good morning, students. We are studying chapter number 19, pollution of air. Last time we had done about definition of pollution, pollutants, air pollution, and air pollutants. Then, very important, we read about the causes of air pollution. What are the causes of air pollution? Smoke from vehicle and factories. Yes, pollution from chlorofluorocarbons, excessive burning of fossil fuel like petrol, coal, diesel, etc. Then we learned about the pollutants. We read last time carbon monoxide, one of the major source of pollution, nitrogen dioxide. Again, we read smoke. Smoke is also harmful for the health. ठीक है, its important function is that it prevents the sunlight from reaching the earth. They affects the normal functioning of plants. और ह्यूमन बीइंग पर इसके क्या इफेक्ट्स थे कि ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन तरह के डिजीज, ऐसे डिजीज क्या होते हैं, हो जाते हैं ह्यूमन को. देन CFC पढ़ा था हमने, वेरी इंपॉर्टेंट. CFC क्या कर रहा था? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का सबसे बड़ा कारण था. It increases the amount of ultraviolet radiation from the sun reaching the earth. This can cause skin and the damage of eyes. Now we talk about acid rain. This is again very important. Normal rain is slightly acidic due to dissolution of atmospheric carbon dioxide in the water. Excessive carbon dioxide, smoke and nitrogen dioxide, when released in the atmosphere, come in contact with the water vapor present there. This results in the formation of sulfuric acid and nitric acid. These acids then fall down with rain, making it acidic. Such rain is said to be acidic. So normally rain that we are getting, it is slightly acidic due to the dissolution of atmospheric carbon dioxide in the water. But excessive carbon dioxide, smoke, nitrogen oxide, when they are released in the atmosphere and come in contact with the water vapor, this result in the formation of sulfuric as well as the nitric acid. और जब ये fall करते हैं, this is said to be a acid rain. मीन्स नॉर्मल रेन से अलग, जब जिसमें आपका मिक्स हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कंपोनेंट, दिस इज सेड टू बी योर एसिडिक रेन. डू यू नो ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज कोज स्किन कैंसर, डैमेज टू आइज एंड किल aquatic life. So ozone layer is considered to be protect the earth from ultraviolet radiation. But due to this layer get depleted और ज़्यादा क्या होती है, थिन होती जाती है, and it can और डायरेक्ट जो रेज हैं वो डायरेक्ट गेटिंग ऑन दी अर्थ. तो इसके कारण क्या होगा, यू आर कॉजिंग विथ स्किन कैंसर, आईज इरिटेशन एंड स्पेशली एक्वेटिक लाइफ टोटली kills. After that, harmful effects of an acid rain. Statues and the structure made from marbles and limestone get slowly corroded when rainwater containing the acids fall on them. Both sulfuric acid and nitric acid can dissolve marble to form salts. Acid rain has corroded the marble of the monuments. This phenomena is called marble cancer. ठीक है, स्टैचू है, स्ट्रक्चर है, which are made up of marble, they get totally corroded due to this acid rain. Because both sulfuric acid as well as the nitric acid, they get dissolved marble to form salts. Acid rain can corrode the marble of monuments. तो इसको क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर भी बोलते हैं. द पॉल्यूटेंट्स इन द एयर दस कोज डिसॉल्विंग ऑफ वाइट
डिसकलरिंग ऑफ वाइट मार्बल। तभी आपने ताजमहल का एग्जाम्पल भी देखा होगा कि वहाँ का जो पत्थर है वाइट मार्बल का था, लेकिन अब वो धीरे धीरे येलोइश हो रहा है, पीला हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। Articles made up of metals and gold and silver ornaments slowly lose their luster when they are affected by the rain. तो आपके जितने भी मेटल्स या जो भी आर्टिकल्स गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स बने होते हैं, कैस मेटल के जो भी आर्टिकल स्टैचूज वगैरह बने, स्लोली दे स्टार्ट लूजिंग देयर शाइन, लस्टर शाइन, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. Acid rain washes away a number of essential minerals from the soil. ठीक है, acid rain also damages the soil because it takes up the important essential mineral from the soil. After that, acid rain has an adverse effect on aquatic life, which is very, very serious and important, particularly that is in the lakes. तो सबसे ज़्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ के ऊपर पड़ता है. ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि जो वाटर एनिमल्स हैं धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और लेक्स जो है कोरेटेड हो रही है आपकी. एसिड रेन इज देयर फॉर क्वाइट हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. देयरफॉर एसिड रेन दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए क्या है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है. सो दिस डू यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट हैव अ लुक ऑन द पिक्चर हेयर. दिस इज द पिक्चर ऑफ ताजमहल विच इज सिचुएटेड इन आगरा. The Supreme Court has expressed serious concern over the damage being caused to Taj Mahal. Instructions have been issued to keep the air in the Taj trapezium area comprising cities of Agra, Mathura and Bharatpur free from pollution. It has been made mandatory for all the industries which fall in this region to use LPG and CNG as fuels instead of traditional fuels like coal and oil. तो स्पेशली गवर्नमेंट हैज बैन. ताजमहल के आसपास एक तो एसिड रेन तो कोस था ही, जो मार्बल है वो येलोइश होने का कारण था ही, स्पेशली जो इसके आसपास फैक्ट्रीज थी, ठीक है, यूनिट जो आसपास प्लांटेड थे, दे हैव बीन स्पेशली इंस्ट्रक्टेड दैट दे हैव टू यूज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड compressed natural gas as fuel instead of traditional fuel. They are going to use their like coal hai, oil, etc. So these are banned. So this one is the very, very important threatening to us. So these all gases have a very, very adverse effect in plants and well as animal life, also on human being. So these are some of the air pollutants that are present in the air and are very, very harmful effects on us. The first, we talk about carbon monoxide. Second, nitrogen dioxide, NO2. Next, smoke. Third, chlorofluorocarbons. Then acid rain. So these are the air pollutants that are present in the air. So this is all about today. Read it properly, understand it, and thank you and have a nice day.